Saifullah is saying this app is fine. Great to know that. Chalo. No, by the way, I'm a Messi fan. It's just I like write Sue a lot of times. But chalo, bismillahirrahmanirrahim. Let's start off with today's class. If you guys remember, yeah, the last class we ended was with this story of how the old computers used to be there. But then I was like, let's start off that story on Monday because that's something totally different. So let's go back to where we left the whole discussion. Let me keep the phone up here ताकि आप लोग के messages मुझे नजर आए, and let me adjust the wire. So yeah, excellent. Bring this laptop a bit close and let's start off. So if you guys remember, I talked about the history of computers in the last class. So I was talking about how like before 1940s, before, okay, this is, yeah, I remember we discussed RAMs in great detail, but we started off with discussion of 1940s RAMs and I forgot turning on my camera. Let me just get a bit away. बहुत ही करीब घुस गया है कैमरा, but चलो, let me just set it up a bit away and हाँ चलो. So before 1940s our PCs used to be different. So computers used to be different. So computers were different. How were they different? Basically, if you guys look at your phones, या फिर you guys look at your laptop, या MacBook, या tablet, या whatever device you're using nowadays, it is a type of device that can store information. So you can store information, right? If I want to download some app, you can download it and store it on your PC. So in simple words, you can store information. But the issue with those old PCs were that the old PCs did not allow you to store information. What do I mean by this? Basically, what happened was that beforehand, when the first computers were introduced, if you guys are following my Instagram page, it's Code Catalyst. Uske andar I was talking about, acha, yahan se, let me see color. Okay, color yahan se change hota hai. So let me adjust it to yellow. So I was talking about, ke, dekho, if you guys are following my Instagram page, uspe that day I posted one post about how the very first programmer was a female. Okay, so it was a female. So yeah, अब उसमें main scene ये कि those programming languages had one thing. अब like if I created a computer which could store some sort of data, उसमें एक बड़ा मसला था. And that big issue was, yeah, उसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि we cannot, यार, we are discussing, Ryan, the history of computers. So I'm talking about how the computers before 1940 were a bit different than the computers we have nowadays. And the biggest difference is that nowadays we can store information. So you could not store information back then on those old PCs. It was more of like, अगर आप लोग को मैंने उस दिन भी example दी थी कि we had that old consoles. It was a console like this, I remember, and then there used to be a screen up here, and then I could include the game, whatever you call it, whether that's like a game file or some game CD, or something, and I used to include and put this in here, and usse kya hota tha, the game used to start off. So whether it was something like Taken, so there were people fighting and maybe like superpowers and stuff and like that. But the moment I used to remove the game, it used to stop working. So the same, so the exact same concept was being there applied back in those old pieces. So like if I wanted to write H, I used to have a card for H. So if this was that big PC, remember those old PCs used to be like super big, like even taking space equivalent to the room you are currently might be sitting in. So इतने बड़े एक computer होता था, and उसमें there used to be some slot where you could like include some card. So if I wanted to write H, I used to add a H in here, and यहाँ पे जो भी हमारा computer में होता है तो वहाँ पे H आ जाता था. Then if I wanted to add E, तो फिर मैं क्या करता था, I used to remove this card. So like it was more like I used to be like, okay, remove this card, okay, remove this card, and now let me add the E wala card. So the E card used to go in, and I used to have and the E card up here. So फिर E आ जाता था. But what's the issue? The issue is that apparently if I, let's say, added E, and at the same time Rayan came out of nowhere and he just took that H card and he vanished. Maybe he went to his own home. So like I don't have the E card right now with me, H card, right? So if I want to write H again, so like if I want to add a H up here, H, but I don't have the card, I cannot write H, right? The problem is I cannot store the values H or E on the PC so that I can directly fetch it from here. But nowadays, अगर आप आजकल के laptops में देखो, do you guys include some sort of cards or something like that onto your computer? No, right? It's like डायरेक्टली आपका ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आप डायरेक्टली उसके अंदर क्या करते हैं,
आप इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, आप एज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यू गेट एज ऑन द स्क्रीन, यू राइट ई एंड इट ई कम्स अप ऑन द स्क्रीन. हाउ द PCs nowadays have the characteristic of storing information. So storing information. So that's the main difference between those old PCs and those new PCs. But who was the very first person to introduce this concept? So what happened was in mid 1940s, there is this computer programmer you can call as von Neumann. Okay, exactly, Rian. Von Neumann. Von Neumann was like, "Yaar, I'm fed up of adding these cards and stuff like that." Maybe he might have thought that way. And usne ye socha, why not come up with a computer that can store data? So he came up with this sort of architecture. That concept is basically known as the von Neumann architecture. Von Neumann architecture. So he came up with this specific, what do we call it? Assembling of your computer, जिसके अंदर होता ही ये है कि it allows you to store data. How does it store data? Store data. So it allows you to store data by adding a CPU into it, by adding registers into it, by adding these, what do we call it? CPU, I guess, CU, ALU, all those stuffs which we were mentioning, all that. So जो इन चीजों को उसने connect किए using wires. Okay, they connected these things using wires, जिसको हम बोलते हैं buses. So he connected a CPU with ALU, मतलब CPU के अंदर ही ALU है, but like he connected different registers with control unit, with ALU using wires. But जब हम wires को refer out करते हैं in the von Neumann architecture, remember, wires in the von Neumann architecture are known as buses. So if I'm like, this is control unit and this is arithmetic logic unit, तो इसको जो चीज connect कर रही है ना, wires that connect this is basically known as a bus. So when we are referring to architecture of computer, to remember, we are going to be using the words buses and bus, like address bus, control bus. We are going to be using that, but we won't be mentioning wires. Up in your course, you just need to know that there is something known as von Neumann architecture, and von Neumann architecture के थे कुछ characteristics. So now we are going to be writing those characteristics. So let me write the heading characteristics. Characteristics में the first characteristic of von Neumann architecture, the very first thing जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए, कि von Neumann architecture basically stated the point, it basically introduced the concept of a CPU. So it introduced the concept of CPU, because without the CPU, you can definitely not store data and at the same time process it and all that. So it introduced the concept of CPU. And what was the CPU? Remember, it was what? It was that brain of your PC. So PC ka jo brain hai, that is basically your CPU. So it was the von Neumann, the banda name was von Neumann, who came up with this concept of introducing the CPU so that he can store data. The second characteristic or the important factor you need to know about, CPU does not store information, it processes information. So आपका जो data store होता है ना, that is stored in your hard disk. जो हम कहते हैं ना कि I bought a 512 GB hard disk. So the data is stored in that hard disk. So it's more like, देखो आप लोग का जो PC बनता है, this might be your PC, this might be the CPU. अब यहाँ पे आपका hard disk है, this might be hard disk. Okay, HDD is basically hard disk. तो आपका हार्ड डिस्क एंड सीपीयू आर कनेक्टेड यूजिंग वायर्स एंड बसेस, द वन व्हिच वी मेंशन अप हियर. सो जब आपके हार्ड डिस्क एंड सीपीयू इस तरह कनेक्टेड होते हैं, इसमें सीन ये होता है कि लाइक लेट्स से इफ आई वांट टू प्ले समथिंग, तो उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट हैपेंस इज दैट आपके डेटा यहां से जाते हैं सीपीयू के अंदर, देन द सीपीयू प्रोसेसेस. सो योर डेटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू एंड इट इज स्टोर्ड. So it is stored up here in the hard disk, and at the same time it is processed by the CPU. So the very first thing जो कि von Neumann ने की, it was that he introduced this concept of CPU. Apart from that, the second thing was that he came up with this ideology that the CPU can access the memory directly. So the CPU can access the memory directly. एक सेकंड मैं समझाता हूँ इसको. Access. Oh, let me raise it. क्या लिख रहा हूँ? Can access the memory directly. Yeah, it was more of like the CPU which we had. So Rian just said that the CPU already existed, but he gave the name to it. So it was like, देखो जो हमारा पुराना CPU होता था ना, definitely it was there. Because if I want to do 2 + 2,
and that was 4. How did the computer get to know the answer? That is being done by the CPU. But the issue came up, goes back to the same point कि जो आपका CPU था, CPU को आपने data खुद देना था. So you used to feed data. You need to like include a E onto the CPU directly कि उसको समझ आए कि okay, I inputted E. I used to add M directly as a card ताकि इसमें हमारे पास यहाँ पे M आता जाए and stuff like that. So ये जो cards हम include करते थे, that was basically what it was, feeding data to the CPU. Now the CPU, the new one which von Neumann came up with, was basically a bit different. It was more of like that CPU allowed you to access data directly. So it was a more, you can say, advanced sort of CPU, as Saifullah just said, that it just upgraded and made some change. And what was that change? That was basically the change which कि अगर ये हमारा computer है, so originally ये हमारे पास CPU होता था. We didn't have any sort of memory. So we didn't have a hard disk or a SSD on our computer. We used to take data, like let's say this is data. No thanks, remove that. So we used to have data, and ये data हम डालते थे CPU के अंदर. But now the new computer was more like the von Neumann banda was like, why not come up with a hard disk? So he introduced this hard disk, okay? He came up with a hard disk, and the new CPU was allowed to integrate with the hard disk directly. So rather than again and again telling it, okay, I'm inputting H, I'm inputting A, inputting B, it came up with this concept कि यार, why not directly communicate between hard disk and CPU? So the CPU directly started talking with hard disk and could directly share data with each other ताकि वो directly processing होती. So this latest type of CPU, this was like, in simple words, an upgraded CPU which allowed you to directly communicate with your hard disk. So the same is point हमने यहाँ पे third लिखना है कि the third point which basically the second point basically कि the second point of von Neumann architecture is that the CPU can access the memory directly. So rather than inputting cards, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम A को include करें, B को करें, C को करें, the CPU now had a direct communication with your hard disk. It was a new component which was introduced in your laptops, your devices, your computers, जिसके साथ directly CPU can communicate. So हमारा एक किस्म latest version of वो आ गया CPU. Now that, apart from that, इसमें एक और point भी है, हमारे एक third characteristic भी है, and that was basically computer memories could store programs as well as data. So when we had a hard disk, let's say यहाँ पे कर लेते. So like if we have a hard disk up here, definitely your hard disk right now, the one which you are literally like, if you are using a phone, तो phone के ऊपर आपके पास क्या आता है? You have like an Android operating system. OS is basically operating system, or you have the iOS operating system, right? Or if you're on laptops, you might be using Windows. Or if you're on Mac, you might be having this Mac OS, which is basically हर साल different होता है, whatever उनका नाम होता है, but like Mac OS, right? So all these things are basically what? These are files to run your PC, right? अगर ये हम ना करें, like if your PC does not have an operating system, even though अगर आपके उसके लैपटॉप के ऊपर चीजें पड़ी भी हो, it's not going to work, right? ऐसा ही है ना? But apart from that, आप मुझे ये बताओ, you guys can also store games, right? So like you also have games, or maybe some audio files or video files. So we also have these type of things on the computer. Now your CPU not only runs Android or Windows operating system, but at the same time, they also allow you to play games. They also allow you to watch videos. They also allow you to listen to some audios. तो ये क्या हो रहा है? It basically allowed this new architecture, जो हमारा new latest computer की architecture है, it came up with this third characteristic point, it can not only access files, but can also store data. So like the files in this context, what? These are the files, right? These are files. So these are the operating files, operating system files, right? But at the same time, we can also store data. So this is your data. So ये आपका data हो गया. Now it can access data, and at the same time it can also work with your operating system files. So जब ये वाला concept आया, तो ये भी एक new point introduce किया गया as per the von Neumann architecture, which stated that computer memories are what? Computer memories are your hard disk. At the end of this class, we are going to be inshallah discussing some common mistakes जो मैंने note down की थी in the assignment. Yeah, we use the exact same version. So like हम same to same ही है, बस उसी में upgrades आते गए. Like every new generation is upgrading its previous CPU, लेकिन we have the same mechanism.
So like अगर हम देखें कि अगर हम एक दूसरे के साथ बात करना चाहें, so we are communicating with each other, right? So if we are communicating with each other, the concept started with, maybe if you guys have watched that video or maybe some picture, कि सबसे पहले अगर लोगों ने बात करनी, they used to take some cups and they used to connect them through some wire, and दूसरी तरफ को भी cup होता, right? So you could just like hear each other and the volume used to go through these wires. So the same mechanism just got newer and newer, and now we have telephones, right? So now we have telephones. So the same thing is applied up here. हमारी चीजें improve होती गई. So Saifullah is saying why update comes in device and voice. Please answer to that. Why sir? अच्छा अच्छा चलो Saifullah do remind me, ये मैं end में आपको other इसके, क्योंकि that's a bit different from the topic, तो मैं end में वो करूँगा. सही है. I will explain it at the end. No worries. बस मुझे याद करा देना. So हाँ बस देखो, it's not about working according to the modern generation. Yeah, it's really good question. So it's not according to modern generation. It's more of like, you can say कि with every passing day, definitely हमारी चीजों में advancements आ रही है. Like what do I mean by advancement? Advancement is like, अगर मैं इस जगह को हटाऊं and I explain it up here, so आप लोग ये चीज analyze करो कि ChatGPT was first introduced in November 22. Okay, so we had ChatGPT. It came up in November 22. Back then, you could only ask questions, right? So you could only ask questions. But then came up November 24. I guess in November 24, yeah, maybe if I just write the latest, very latest zamana. So maybe refer to as what's today, it's July 25, right? So we have July 25. Now what's happening? You can even create images. So with every passing day, definitely, हमारे पास क्या हो रहा है? We are improving, we are learning. So we are learning. Firstly, you guys didn't know what binary was maybe 2-3 months ago, right? लेकिन exactly, now we have multiple things like ChatGPT, we have Gemini, Google Gemini, we have other such tools वगैरह for AI. But what's happening? Basically, आप लोग सीख रहे हो, you're learning, right? Then we are applying. So we are applying concepts, right? So we are applying. And when we are applying, definitely we make mistakes. Like अब आप लोगों ने जो कल टेस्ट किया था, a lot of you made some mistakes. So when you guys made those mistakes, आप उन्हीं mistakes से analyze करते हैं, then you relearn, then you reapply. And so with every such cycle that goes on, you basically improve yourself. So at the end, what happens? Improvement. So you just improve yourself at the end. And when you improve, definitely you go from just questions to images. So the same concept was being basically applied for CPUs. कि जहाँ पे maybe if you ask your parents, they can tell you more about कि अभी हमारे पास क्या होता है? We have flash drives, we have CDs and all that. But we used to have something known as floppy disks. We used to have floppy disks. A floppy disk were the old type of USBs, old type of CDs, and ये चीजें. Again, it had only one masla. It had maybe maximum 5 MB space. And now floppy disk used to be such big thingy, right? इतने बड़ी चीज होती थी डब्बी जितनी. It used to be something of this size. But now what's happening? You have this much small SD card and it has a space of like 256 or 512 GB. So we are just advancing. So the same thing is that Rian just said that it is getting advanced. So it's, yeah, definitely you're learning new things, you're making mistakes, and you're applying those mistakes to get improved. So वही same concept आप यहाँ पे भी apply करो कि with every passing by, yes, SD cards have हटते गए. Now your latest phones maybe do not even support SD cards, right? So अब वो चीजें खत्म होती गई because ज़माना नया होता गया. So we can say the third point right now is that computer memories could store programs as well as data. So computers, let me write it this way. Computers can store programs as well as data. So हमारे पास computers में हम programs भी store कर सकते थे. At the same time, we had this option of storing data as well. So programs refer to these maybe programs, I mean like operating system, and data say I mean like maybe games or these videos or audio files or whatever you want to have a look at. So ये चीजें आप लोग के अब latest computers में everything is the same thing. So आप ये तीनों points को देखें, and it is something that 100% applies to the computers we have today. Apart from that, हमारे पास एक fourth point भी आता है, fourth characteristic or fourth factor, and it is basically these programs were basically made up of instruction which could be executed. So like what do I mean? I mean, now if I have maybe if I download Minecraft, right? So I can download Minecraft onto my PC, right? So I can download Minecraft. But what's the thing? If I just download Minecraft, is it only going to stay there? Yeah, but I can also play it.
Definitely I can also play the game, right? But how can I play the game? I can play the game when this Minecraft के अंदर जो files है those convert into zeros and ones. यार हाँ, they were identical. You used to include those. There used to be like जैसे हमारे CD disk आते थे ना, CD disk. So you used to have a place जहाँ पे आप floppy disk को include करते थे. When I was a kid, uh, and the PCs when I had back then, when I was like maybe very small, very young, उस टाइम में ये था कि I have seen PCs जिनमें floppy disk के slots होते थे. But I never ever had a floppy disk of my own जिसको मैं टेस्ट करूं कि यार ये चलता कैसे. But yeah, I did see it in those PCs. So I'm just talking about, अभी देखो Minecraft है, I can play it, right? So you can only play the thing when I can convert it from files to what? To binary, right? So this means the computer can process it. यार, I'm not reminding my 20s, but chalo. So you need to convert the file into binaries, right? And so binary files ko kya hota hai? Your computer executes. That's the whole mechanism behind how this thing works. You have file, you convert. अब आप computer में जब Minecraft download करते हैं, there is something known as setup, right? So there is setup.exe. So you open this setup.exe and then it is like where to install it, and you install the game, yeah, whatever on if you're on a computer, right? And so if you go to if you go to the C file, C file में क्या होता है? You have that game launcher. So you might have a launcher file. And so you just run the file and the game runs on. But what happens? Launcher file ke piche there is multiple number of files which are being basically converted into binary, and those binary numbers are then executed by the computer. So what happens? We have a file, and this file are basically instructions. When I talk about instructions in this topic, remember, when I say the word instruction, I basically refer to binary numbers. So I mean ki like when I say this file has some sort of instruction behind this, I mean that I converted this file into some binary number, which can be then later on executed by the computer. So अब मैं यही बोल रहा हूँ कि अब I have instruction, right? So अब इस instruction को computer can understand. So computer PC can understand, as well as it can also at the same time what execute. So what do I mean by execute? Maybe execution say I mean like right now I gave you an example of Minecraft, but what if I have an example of an antivirus? So if I have an antivirus and I'll start scanning, if there is some sort of virus, automatically it is going to delete that, right? So when it will be deleting that file, उसमें क्या हुआ? Basically it executed this concept जिसके अंदर it deleted everything which was out there जो कि more or less हमें नहीं चाहिए था on the PC. So it executed those files. So what just happened? It executed the command which we gave it, but that command was understood by the computer because it was in form of instructions. And instruction is what? Instruction. Yeah, I'm basically talking about Saifullah sir, can you explain the 0-1 वाली चीजें? So I'm just saying कि देखो जब आप कोई computer के अंदर game download करते हो ना, या if you're on a tablet right now, if you're on a tablet, so you might be on a tablet, right? So tablet के ऊपर, this might be your tablet, right? So tablet के ऊपर definitely if you want to take a class, you need to download this Zoom app या Google Meet app, right? You need to download it. But when you download it, आपको तो ये नजर नहीं आता ना कि इसके पीछे program, how does your PC or tablet knows that I'm dealing with Zoom? How does the PC or tablet knows? अब इसके पीछे क्या concept? That is really important. Exactly, जैसे हर game होती है. So what happens is कि जो ये files है ना, these files, ये files at the back are basically binary. So you don't see those binary numbers, but when the computer wants to execute it, when you open Zoom key app, how does the screen goes from that opening blue color Zoom wali app to start meeting or join meeting wala option? So how does that happen? Basically, your PC converts Zoom wali app into binary and then it executes it. So like आप इसको process करते हो, the computer sees कि okay 010001. This is just an example, like example है. See, this is example. So आपको इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप हुआ है कि it executes that file and फिर उसके बाद मे बी आपके पास ये Zoom के ऐप की जगह it comes out as something like this. Maybe if this is the other screen, यहाँ पे आपके पास this is the Zoom app and you have start and then you have join and stuff like that. हाँ, so देखो exactly रेयान, अब बाइनरी में हम क्यों कन्वर्ट करें? बिकॉज रिमेंबर आई इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी अगर ये क्वेश्चन उधर टेस्ट में था या नहीं था, बट there was this mistake जो कि a lot of kids made in the assignment. When I asked the question, when there was this question which stated कि why are you using hexadecimals? Why are you using hexadecimal? So a lot of kids mentioned how hexadecimal takes less space on the memory. But
आप लोग को ये समझनी चाहिए कि द कंप्यूटर ऑलवेज डील्स विद बाइनरी नंबर्स. So even if you have a Zoom app like this, yeah, you have some hexadecimal number like A, E5, या anything else, at the end आपके कंप्यूटर में वो सब कुछ बाइनरी में कन्वर्ट होता है. So if you are storing it, it converts into binary. If you convert some Zoom app, it goes into binary. So at the end the PC के अंदर जो भी होता है वो बाइनरी के फॉर्म में ही होता है. So stating this point, जो कि आप लोगों में से काफी बच्चों ने ये लिखा था कि talking about how hexadecimal takes less space in the memory, that is an incorrect point, because at the end the memory has to have only binary thing. Less space. अब आपकी वो जो बात थी ना रेयान, you stated less space. So I did mention that comment on your file के your less space वाली बात is a bit vague. If you mean to say less space on the screen, like if I have a screen up here, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. Let's not फ्लो को खराब नहीं करना चाहिए. लेट्स डिस्कस दिस लेटर ऑन. इसको हमने आज डिटेल में पढ़ना है. बट नाउ आप लोग को समझ आ गई, राइट? सो हम हर चीज को बेसिकली उसमें कन्वर्ट करते हैं. किसमें? हमने इसको सारा का सारा बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. सो वी बेसिकली सी दैट स्टोर्ड प्रोग्राम्स वर मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड. सो ये हमारा पॉइंट है. सेम टू सेम वही बात है कि स्टोर्ड प्रोग्राम्स, हाँ बिल्कुल, स्टोर्ड प्रोग्राम्स, बिल्कुल सैफुल ऐसे ही. सो स्टोर्ड प्रोग्राम्स वर बेसिकली नॉट रिटन, बल्कि आप बोल सकते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम्स वर मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो वर मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड. सो ये आपके चार ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है which you guys should be knowing. Okay, that could be executed या processed. That could be executed or processed. It's the same thing. Okay, so by the computer. So now if the question comes in your exam या maybe whatever chapter number 3 worksheet या test is, तो आप लोग को ये 4 points याद होने चाहिए. So I will suggest कि if you are looking at the notes later on, do memorize these 4 points. These are literally very important. And अगर आपसे कोई पूछे what was the von Neuman architecture, so you just need to tell them that the von Neuman architecture में ये जो 4 अभी हमने points आप लोग को बताए ना, those 4 points जो मैंने अभी आप लोग के सामने, यार why is it not removing this? अच्छा नहीं होता तो छोड़ो. But these 4 points are what you need to write in your exam. हाँ, learn these 4 characteristics. अब देखो, इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में यूजेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल कराया था. बेनिफिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल में आई इवन गिव यू गाइस दिस वन बिग एग्जांपल, जिसमें मैंने टेक वाला बंदे से समझाया था कि हाउ द चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस व्हेन यू यूज हेक्साडेसिमल इन कंपैरिजन टू बाइनरी. So the same to same point आप लोग को याद करना चाहिए. The test which I gave you that day, it had the exact same question, like why is it preferred? So I guess only a few students wrote that point, जिसमें उन्होंने बताया था कि there is a less chance of error, which might have gotten you the correct mark. तो ये वाले जो points है, जो इस तरह में characteristics लिखवाता हूँ, इनको आप लोग याद कर लिया करें. These are literally very important. So now we are done with the characteristics. von Neumann architecture का आपको ये overall image तो clear हो गया. But now इसके बाद हमने क्या करना है? Great to know सैफुल्ला. अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमें पता लग गया कि von Neumann architecture क्या चीज होती है. Now it's important to understand कि आपके कंप्यूटर में ना कोई operations होते हैं. Now when I talk about the word operation, let me zoom in. So when I talk about operations, I can talk about operations. So I mean something जिसका मतलब है execution of something. So when I say operation, this means execution of something. Execution of 2 plus 2 is an operation. Execution of a running Minecraft game is what do we call it? A type of क्या नाम है, it's an operation. Maybe opening up Google Chrome is an operation. So all these things are operation. But at the end, if I've tried to narrow down all these operations into 2 broad categories, तो हमारे पास 2 type of operations आती है generally. One is the read operation, and then the other is the write operation. So we have these 2 type of operations, read operation and the write operation. Now we need to quickly have a look at what is the read operation and what's the write operation. So the read operation, let's discuss that first. So we have the read operation. So you get the read operation up here. अब read operation में हमने क्या पढ़ना है? That is the important part. So read operation, even from the word read, आप लोग को समझ आ जानी चाहिए कि we are trying to read some data. So what do I mean by the word read some data? That is important to understand, right? So it's more of like, अगर मैं ये बोलूं कि अब देखो, नहीं, process data is something different. Processing data is different, Ahmed. When I say read data only means getting data.
सो लाइक अगर ये मेरा सीपीयू है, सीपीयू, okay, computer by the way, sorry, not CPU, computer up here, and then there is my CPU up here, and I have my hard disk up here, right? So HDD is basically the short form. Let me write it up here. HDD is basically your hard disk. इसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, but just know HDD is hard disk. Okay, so I'll be writing HDD. अब HDD and CPU have been connected, right? Using what? Using buses, those which I mentioned start में. Now, if I want CPU to process a question 2 plus 2, it definitely सबसे पहले इसने क्या करना है, इतने मेमोरी से 2 को fetch करना है, right? It needs to get 2 from the memory. So it needs to fetch 2 from memory. When it wants to fetch 2 from memory, आपके ख्याल में how will the CPU get to know कि यार 2 की क्या वैल्यू है या 2 की equivalent binary value क्या है? So it is going to use this operation for read. So it will like say read this specific thing. So what's going to happen? It will get, yeah, I will say it will fetch the data from memory. हाँ, अब यही हुआ ना कि आप देखो, इफ आई नीड 2 फ्रॉम द मेमोरी, तो अब सीपीयू ने क्या बोला? सीपीयू ने बोला कि रीड सम डेटा. सो उस कॉन्टेक्स्ट में सीपीयू गया, उसने हार्ड डिस्क से पूछा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू फॉर 2, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, या इफ आई वांट टू रन लाइक RDR2 गेम अप हियर एंड RDR2 सेज कि ब्रो go open up this file game.exe. So how will the CPU open game.exe? How will the CPU open game.exe? उसके लिए क्या होगा? CPU is gonna ask HDD कि read game.exe. तो वो इसको अपनी लोकेशन बता देगी कि यार this is the equivalent. It does not send, यार it does not send. हाँ, रीड वाले ऑपरेशन में ये कि आपकी डेटा वो रीड करके सीपीयू के पास आए. एग्जैक्टली रिया. सो द हार्ड डिस्क डज नॉट सेंड डेटा. हाँ, यू कैन एज्यूम इट सेंड्स डेटा, बट रीड ऑपरेशन इज मोर ऑफ लाइक कि सीपीयू को समझ आ गई कि हाँ इसके ये डेटा. सो यू कैन से कि हाँ यू आर करेक्ट रियान कि द हार्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेंड डेटा टू द सीपीयू. रिमेंबर, आपके सीपीयू के ऊपर कोई डेटा नहीं होता, सीपीयू के अंदर कोई डेटा नहीं होता. द डेटा गोज फ्रॉम हार्ड डिस्क टू स्टफ नोन एज रजिस्टर. रिमेंबर दीज बाइनरी रजिस्टर जो हम मेंशन कर रहे थे. सो आपका डेटा हमेशा हार्ड डिस्क के जाते हैं रजिस्टर्स के अंदर, एंड फिर वहां पे एग्जीक्यूशन होती है बाय सीपीयू. सो अभी इसके बाद हमने वैसे भी रजिस्टर्स पढ़ने हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी. लेकिन जो रेयान ने बोला, यस, जब हम ये रीड का कमांड करते हैं, व्हाट हैपेंस इज कि आपका डेटा हार्ड डिस्क से निकल के सीपीयू को समझ आ जाती है कि ओके नाउ आई वांट टू प्ले RDR2, लेट मी ब्रिंग द RDR2 की फाइल्स फ्रॉम दिस हार्ड डिस्क टू वेयर, to my very specific registers या जहां पे I need to process it. Now आप लोग को इसकी एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए. अब जब रीड करते हैं ना, रीड वाली जो डेटा, इफ आई वांट टू से कि read this binary number 010110. Now this is some binary address, right? अब इसका क्या मतलब है? This basically means कि you need to go to this 010110 वाली place. This is some location, okay? So आपके कंप्यूटर में जब एड्रेसेस या लोकेशन भी होते हैं ना, let me write address too. So if अगर आपके कंप्यूटर में कोई एड्रेस होता है या लोकेशन होता है, अब लेकिन इट्स कंप्यूटर, रिमेंबर. सो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हाट zeros and ones, इट कैन ओनली गेट बाइनरी, राइट? सो जब आप कंप्यूटर के अंदर रीड करना चाहते हैं तो आपने ये बताना है कि रीड 010110, which basically mean get data from what place? From 01011100. So अगर हम यहाँ पे एक मैप सा बना दे, मैप सा, and that map is something like कि okay, अगर आप 01011100 को रीड करते हैं तो आपका इस प्लेस के ऊपर जो डेटा है that is M. So जब आप M को रीड कर लेते हैं तो the computer will get to know, okay, I went to 01011100 and I saw that place has what? It has the value M. So now the computer is basically going to get this M, get the M and send it for processing. So this is basically how your computer read operation works. So आप data क्या करते हो? आपने data को read किया from where? You read it from the address given by the CPU. So the CPU will give you the address कि यार read it at this point. And then you go to that address point, वहां पे जो equivalent data होता है, you get that data and फिर आप उसको process करते हैं. इसी तरह ये तो रीड वाला हो गया. लेकिन रीड वाला, अब इसमें ना आप लोग को 2 रजिस्टर्स पढ़ने होते हैं. अब हमारे पास जो डेटा हम एड्रेस है, दिस एड्रेस हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर, राइट? लाइक इफ आई से कि रीड 010000, तो रिमेंबर आप लोग अभी तक जो भी कर रहे थे कंप्यूटर साइंस के अंदर,
हाँ, the CPU is gonna get M. आप नहीं देख रहे, like it's more of like the CPU at the back end. अगर CPU को कोई data चाहिए, like CPU wants to have the game files, like CPU wants the game files, right? So the CPU wants what? It wants the game files. So अब CPU को game files कैसे run होगे? It will be like read game file वाली file, go to this location where we have these gaming files. वो उस point पे जाएगा and उस point पे जाके it's gonna get that files and फिर वो जाके, यार अल्फाबेट्स तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिए ना. इट वोंट बी अल्फाबेट्स, इट कैन बी बाइनरी. सो लाइक अगर मैं बोलूं 01001010 के ऊपर दिस इज द एड्रेस, ओके, दिस इज लोकेशन, एंड एट दिस पॉइंट मे बी यू हैव द नंबर 011011, दिस इज द डेटा. सो अब अगर मैं कंप्यूटर में डेटा भेजना चाहूँ एंड दैट इज मे बी बाइनरी, तो अब आपके ये लोकेशन हो गई अल्फाबेट एंड दिस इज योर डेटा. सो ये डेटा पर सेंड होगा, दिस विल गेट सेंड. हाँ, अब ये तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा था कि जो आप लोग के यहाँ पे अल्फाबेट्स है, मे बी फॉर इंस्टेंस अगर उस जगह पे जो भी हुआ, even if it's like some binary, like even if it's like 010, yeah, maybe if it's like maybe something, but like if it's a hexadecimal FE5, तो वो hexadecimal को भेजेगा. But this is for your explanation. Do know whenever we have कंप्यूटर के अंदर फाइल, लाइक जैसे अभी इसके ऊपर रीडिंग और ये वाली कहानी हो रही है, तो आपकी हमेशा बाइनरी ही होती है, राइट? सो आप हमेशा बाइनरी के साथ ही डील करोगे. सो लाइक इन योर एग्जाम्स इफ इट सेज कि रीड दिस वाली पार्ट लोकेशन एंड उसके बाद आप जाओ उधर से डेटा लो, द डेटा विच यू आर गोइंग टू गेट विल नॉट बी लाइक M और A, इट विल बी डेफिनेटली सम बाइनरी नंबर लाइक 011100. बट आप लोग को समझाने का मकसद ये कि वेदर इट्स M, yeah, it's some sort of binary value. We basically getting the data at that specific address and वो हम पीछे भिजवा रहे हैं to the CPU for processing. लेकिन अब आप लोग ये समझो कि यार जब हम ये डेटा 01011100 है, ये डेटा भी तो कहीं स्टोर हो रहा है ना. दिस लोकेशन, वेयर इज दिस एड्रेस स्टोर? लाइक दिस इज सम एड्रेस, राइट? दिस इज एन एड्रेस, दिस इज एन एड्रेस. सो अगर आप लोग चैप्टर 1 में बार बार पढ़ रहे थे कि व्हेनेवर वी वर राइटिंग आंसर्स फॉर बाइनरी, वी यूज्ड टू राइट देम इन रजिस्टर्स. रिमेंबर, हम उनको रजिस्टर्स में लिखते थे. वी यूज्ड टू राइट देम इन 8-bit रजिस्टर, मे बी समटाइम्स अगर बड़े बाइनरी वैल्यूज होती थी तो 12-bit रजिस्टर. जस्ट लाइक दैट, जब हम ये डेटा हमें मिल जाए, like maybe अगर M की बाइनरी वैल्यू 0111100 है, this is the data which I need to send to the PC. अब इसको मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा? इसको भी मैंने किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है. नाउ हमने अभी ये पढ़ना है कि ये जो डेटा हम बेच रहे हैं एंड एड्रेस, इनको हम किस रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो आपके लिए इसमें 2 रजिस्टर्स आ गए. द वेरी फर्स्ट, कोई नहीं, 128 एक्सीड अगर होते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास 12-bit 16-bit रजिस्टर आएंगे. द बिगर द रजिस्टर द मोर डेटा इट कैन स्टोर. सो यू डोंट नीड टू वरी इवन इफ इट एक्सीड्स 128 या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सही है? सो अब हमने 2 रजिस्टर्स पढ़ने अभी. In the context of read and write operation, these are only specific to read and write operation. So those 2 register जो कि एग्जामिनर कभी कभार मोस्टली पूछता भी है in those old papers. एग्जामिनर को बड़े मजे का ये सवाल लगता था and he used to always be like if this is the data in this register, तो फिर दूसरे रजिस्टर में क्या डेटा होगा वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं. and you don't need to worry, super easy question. इतने मजाक वाले, वो पैरिटी बिट वाले क्वेश्चन याद है ना, उस तरह के क्वेश्चन है. So the first register which you need to see is MAR. You can't see the screen, let me have a look. Can the other kids see the screen, guys? Can you please let me know? Manal, Saifullah. Acha, it's fine. Chalo, good. Yeah, good. Okay, Ahmed. Thank you. So, ab dekho, we have MAR. This is the very first register. Iska pata hai full form kya hota hai MAR ka? MAR full form is basically memory address register. So memory, then you have the address, and then we have what? We have the register. So we have the MAR, memory address register. And now what is MAR? MAR basically stores the memory address of the data that the CPU needs to access. So let me write it. Ye definition aapko aani chahiye. It stores the memory address of the location, the CPU or the computer. Okay, so you can write the CPU / computer wants to process, wants to access, you can say process, whatever word you go with, access / process. So what does this mean?
It stores the memory address of the location the CPU or computer wants to access your process. So basically, if I'm like ऊपर वाली example आप लोग देखो कि if I want to process the data, I want to what? I want to process the data जो कि stored है 0101100 पे, right? So I want to process the data that is stored at this address and I want to get the data. Data क्या है? Data तो ये है. But I want to what? I want to get the data और उसका जो address है that is 0101100. So ये जो address है, this is going to be stored in your MAR. So the register जहां पे आपका address stored होगा, the address जिसके ऊपर जाके जो data होगा वो अपने CPU को भिजवाना है, that is known as what? That is called as the MAR. So in this context आपकी examiner में examiner आपको question कैसे देगा? It will be like let's say the question will be Ahmed wants to send some sort of data to Saifullah. But before that, he wants to get data from the location 0100101. At that point, at that specific memory address, this is your address, okay? This is your address. At that point, the data at that specific address is 110110001. This is basically data at what address? At the address 01001101. Now, it will give you a question जिसमें वो बोलेगा MAR and आगे वो बना देगा आपके लिए इस तरह का बड़ा ना register 8-bit का. And then he will be like, write the address and now he will be like, complete this table. अब आप लोग सोचोगे what is MAR? So आप लोग को पता होना चाहिए MAR is memory address register. Now what is stored in the MAR? So MAR basically stores the memory address of the location the computer या CPU wants to process या access, right? So Ahmed wants to access the data which is stored at this address 010001101. So आपका जो MAR होता है, it stores the address. So आप अहमद ने क्या करना एग्जाम के अंदर, he's just directly going to take his pen and he will copy this up here क्योंकि this is your address. So you write the address in your MAR. So you will be like 010011101 and you get the mark up here. अब ये तो आप लोग को समझ आ गई कि जो हम एड्रेस वाली कहानी डील करते हैं ना, दैट इज बेसिकली जो हम एड्रेस को जिस रजिस्टर में स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज MAR. बट एट द सेम टाइम आप लोग को मैंने ये भी बोला है कि लाइक अब लेट्स से आई गॉट द डेटा. if I want to type the letter A, like, अब Riyan just said कि if we want to type the letter A, but its address will be stored, like let's say if this is your computer, right? And यहाँ पे A memory के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, maybe this is your big hard disk, right? So अब जो address है, maybe this has an address of 1100 binary में इसका address ये सही है. अब बाइनरी में इसका एड्रेस ये. Now if when the computer wants to access this point, when the computer wants to get A from the hard, it's like it wants that A, तो अब वो क्या करेगा, MAR के अंदर वो डालेगा एड्रेस, MAR which is memory address register, right? So उसमें वो डालेगा 0111000 and then it will be like, okay, now do the read operation. So the moment computer says do the read operation, कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि ओके लेट मी गेट दिस MAR वाले पॉइंट पे एंड आई विल सी कि MAR के अंदर कौन सा डेटा, एंड देन वो डेटा लाइक सैफुल्लाह सेड व्हाट विल वी डू विद द डेटा. अब इट्स लाइक इफ आई वांट टू राइट A ऑन द स्क्रीन, तो मैंने उस डेटा का क्या करना है, मैंने स्क्रीन पे लाना है, राइट? सो व्हेन आई प्रेस दैट A बटन, सो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर इज गोइंग टू सी कि मेमोरी के अंदर A कहां पे, इट इज गोइंग टू सी इट स्टोर्ड एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट को वो डाल देगा MAR के अंदर, एंड देन इट विल बी लाइक आपने रीड ऑपरेशन दबा दिया एंड दैट डेटा कम्स टू योर CPU एंड CPU देन प्रिंट्स इट ऑन योर स्क्रीन, और आप लोग को नजर आ जाता है कि यार स्क्रीन के ऊपर वी हैव अ A रिटन अप. सो इस तरह जब आप डेटा को प्रोसेस करते हो तो दैट्स द प्रोसेस बिहाइंड दैट. सो मतलब द एड्रेस ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, इट्स नॉट स्टोर्ड इन द MAR, इट्स स्टोर्ड इन द मेमोरी. इट्स स्टोर्ड इन द मेमोरी. लाइक अगर अभी आप लोग ने लाइक इन सिंपल अल्फाज आप लोग, इट विल ऑपरेट लाइक, देखो अभी ऐसा है ना कि जो आपका MAR है ना, MAR दिस इज बेसिकली योर पोस्ट ऑफिस. आप इसको ऐसे समझ लो, इट इज योर पोस्ट ऑफिस. नाउ द CPU इन सिंपल अल्फाज अगर आप लोग को समझाऊं, CPU knows your address, it knows your addresses, but it does not have the data. Like CPU in simple words is your school, राइट? स्कूल से किस तरह, लाइक अब स्कूल को पता है ना कि हर बच्चे ने कहाँ पे रहता है. दे हैव गिवन यू दैट फॉर्म एट द डे वन ऑफ दैट एडमिशन व्हेन यू आर टेकिंग दैट एडमिशन इन द स्कूल. उसमें यू राइट योर परमानेंट एड्रेस, राइट? सो यू मेंशन दैट एड्रेस, बट स्कूल डज नॉट नो वेदर यू विल बी इन होम और नॉट. सो अब अगर स्कूल वालों ने, स्कूल वांट्स टू सेंड अ पैकेज, दे वांट टू सेंड अ पैकेज टू मे बी रेयान. अब रेयान के घर उन्होंने पैकेज भिजवाना है फॉर रेयान, राइट? दे वांट टू सेंड अ पैकेज टू रेयान.
अब रेयान का जो एड्रेस होगा ना, वो तो स्कूल को पता है, राइट? दे नो कि लेट्स से रेयान लिव्स इन पिशावर में सम XYZ लोकेशन. सो जो MAR होगा ना, MAR is basically your address. No, they will not ask you. This is just an example. Like उनको अब पता नहीं है this point कि whether you are at home is the data they need. So अब ये जो package है ना, that package has this question. It has that question, send Rayan या is Rayan home or not. So अब इनको नहीं पता. That is the data which the computer needs, या the school needs, whether you are in home, maybe you did not take the class someday, and so they want to send a mail to your home कि यार is Rayan home or not. So this is basically the data which the computer needs. अब MAR के अंदर they are going to include your address. अब maybe that will be XYZ and then they add up your city which might be Peshawar. सही है? So अब वो Peshawar, XYZ Peshawar, MAR के अंदर आ गया. अब computer will be like, okay, let's execute it. So he will be like, press that read operation button. So the moment CPU says do read operation, सही है? रीड ऑपरेशन, तो क्या हुआ, आपका पैकेज MAR यहां से डिलीवर हो गया टू दिस एड्रेस, मे बी थ्रू TCS या समथिंग. एट होम रेयान इज लाइक, ओके दिस इज मे बी रेयान and there is this TCS wala banda with that cool hat. Okay, this is the hat. Okay, and then there is this cool TCS wala boy, and he's like, okay sir, there is your package, and this is Rayan, happy bole, okay give it to me please. And Rayan, MAR knows nothing. MAR only stores the address. MAR के पास ना डेटा की इंफॉर्मेशन है, MAR को ये नहीं पता कि पैकेज के अंदर क्या है या व्हाट इज द क्वेश्चन. MAR only stores address. So remember इसमें जो A है ना, A, this A refers to what? It basically refers to your address. So MAR only deals with address. So the moment Rayan opens it, रेयान को पता लग जाएगा कि the school is asking for, हाँ वो रीड ऑपरेशन करेगा, डेटा पहुंच गया रेयान के घर. नाउ हेडर एंड MAR रिलेटेड, नो नॉट हेडर जो होता है ना, दैट चैप्टर नंबर 2 में जो हमने हेडर पढ़ा था, इट वाज मोर ऑफ व्हेन सेंडिंग डेटा ओवर इंटरनेट. दैट वाज डिस्कसिंग इंटरनेट, राइट? इंटरनेट की कहानी ओवर पैकेट्स एंड राउटर्स एंड नोड्स, उन चीजों में हेडर होता है. जो MAR होता है, MAR इज ओनली बिटवीन योर कंप्यूटर कंपोनेंट्स. तो जो MAR होता है, दैट इज मोर ऑफ बिटवीन CPU एंड कंपोनेंट्स ऑफ PC. सो जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ PC और CPU के दरमियान जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो उनमें MAR MDR होता है. सो सर नाउ द टीचर नोज माय एड्रेस एंड नेक्स्ट टाइम. हाँ, अब देखो एड्रेस TCS गाय को नहीं चाहिए, TCS गाय इज MAR, राइट? अब इसके बाद लेट्स से MAR को हम अपडेट करेंगे, लाइक मे बी अब रेयान को तो पैकेज दे दिया, एट द सेम टाइम TCS गाय गेट दिस कॉल कि यार रिमेंबर दैट पैकेज व्हिच आई गिव यू 10 days ago कि अपने पास रखो, नाउ आई वांट यू टू डिलीवर दैट टू XYZ इस्लामाबाद, मे बी टू सैफुल्ला हाउस. अब क्या हुआ, द एड्रेस चेंज, राइट? एड्रेस इसको किसने बताया एट द एंड, मे बी इट वाज अ कॉल फ्रॉम द स्कूल. सो एड्रेस इसको फिर CPU नहीं बताया, एड्रेस इसको CPU ने बताया कि यार एड्रेस चेंज कर दो, यू नीड टू सेंड डेटा या गेट डेटा फ्रॉम अ न्यू प्लेस. तो आपका MAR is going to get updated. MAR आपका चेंज हो जाएगा to the new place जहां से आपने डेटा निकाला है. So every time when you need to get data from some new point, आप MAR को अपडेट करते हो. So originally if it was Peshawar, अब उसके बाद इस्लामाबाद में इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, राइट? सो हम MAR is the next place जहां हमने डेटा डिलीवर करना है. सो एड्रेस चेंज हो गया. सो MAR आपका बार बार चेंज होता रहता है. द मोमेंट यू नीड टू गेट अ डेटा फ्रॉम सम न्यू प्लेस, आपका एड्रेस चेंज हो गया. बट जो आपका सारा का सारा एड्रेस है, लाइक रेयान यू सेड कि TCS guy knows the address. No, not the TCS guy. It is basically the CPU who knows your address. It is the school who knows your address. So the moment the school knows the address, अब school TCS वाले को बोलेगा, TCS is basically MAR. So you update that MAR बार बार again and again and again. हाँ एग्जैक्टली, स्कूल इज प्लेइंग द रोल ऑफ CPU. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल परफेक्ट. सो डिड यू गेट इट राइट नाउ और नॉट? अब मुझे कोई बता दे. रेयान, इज इट क्लियर नाउ? अब आपको समझ आई कि MAR हमेशा जब आई वांट टू चेंज द एड्रेस, तो आपका उसके साथ MAR बार बार अपडेट होता जाएगा. एंड सो एवरी उसके बाद आपका, उसके बाद क्या कहते हैं, MAR जैसे ही होता है उसके बाद लाइक MAR आपका डेटा चेंज हो गया, तो उसके, यार आई एम कंफ्यूजिंग इट, बट MAR बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस जहां पे आपने डेटा जहां से लेना है. Exactly. बिल्कुल. Ahmed said CPU is the nucleus of computer in von Neumann. बिल्कुल perfect. If you guys are studying chemistry, तो आप लोग को पता होगा nucleus, आपका nucleus आ गया, right? या in simple words atom. Atom आपका CPU बन गया. And CPU के अंदर अगर आपके पास अब जो ALU हो गए या control unit which we were talking about in those last classes, those are stuff like neutron, proton, electron. So these are things within CPU. लेकिन at the main point,
बायोलॉजी एंड यार आई हैवंट स्टडीड बायोलॉजी बाय द वे, सही है, सीपीयू इज द मेन एलिमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ वही न्यूक्लियस बायो में होता है, आई हैवंट स्टडीड व्हाट डू वी कॉल इट बायोलॉजी, आई एम अ सीएस गाय, CS guy, yeah, CS guy. But chalo, if you guys are studying biology, that's also great. I have a post coming up, inshallah, today or maybe tomorrow. Just अंदर I will be talking about how if you have bio and CS, that's literally very good for you. But chalo, अब आपके पास ये MAR के अंदर डेटा आ गया. Now we have 3 minutes and उसके बाद हम एंड कर देंगे. बट अब देखो हमने MAR वाली कहानी तो कर दी, बट ये जो डेटा हमने भिजवाना है ये भी तो कहीं स्टोर होगा ना, किधर गया दिस डेटा. इसको जो रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं ना, दैट इज बेसिकली नोन एज MDR. सो सेम एज MAR, यहाँ पे A इज एड्रेस, यहाँ पे D इज फॉर डेटा, सही. सो इट्स मेमोरी डेटा रजिस्टर. सो मेमोरी डेटा रजिस्टर की मैं जल्दी से डेफिनेशन आप लोग को लिखवा देता हूँ. मेमोरी डेटा register. So we have the MDR as the memory data register. This is the second type of register जो कि आप लोग को पता होना चाहिए. And what is MDR? It stores the data that needs to be accessed या may be stored at an address. So like if I want to say कि now the school wants information, so अब school को क्या चाहिए कि whether Rayan is present or not. So जो yes or no वाला question होगा ना, उसको हम MDR के अंदर करेंगे. So it stores the data at the address which is either going to be processed, simple straightforward लिख लेते हैं, which is going to be processed by the computer, which is going to be, आगे इसमें जो further complications है वो हम कल discuss करेंगे, but for now which is going to be processed by the computer. Now the data which needs to be processed by the computer will be stored where? MDR के अंदर. Now जो आपके पास originally data आया है, original data, that address is stored in MAR, but जो आपके वो डेटा उस एड्रेस के ऊपर जो आपका डेटा है, लाइक रेयान के घर में जाके रेयान वाली कहानी होगी ना, राइट. रेयान नाउ नोज कि ओके स्कूल वाले ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, लेट मी राइट इट, आई जस्ट इरेज्ड इट, MDR. ओके, सो अब जो रेयान वाला क्वेश्चन है कि रेयान घर पे है या नहीं है, दैट विल बी नाउ गिवन बैक इन MDR. नाउ अगर बैक टू द सेम एग्जांपल, हमें ये पता लग गया कि एड्रेस के अंदर ये 01001101 इज योर एड्रेस, राइट. बट इस एड्रेस के ऊपर डेटा क्या है, that is basically 11011001. Now this is data, this will be stored in your MDR. So अगर आपका क्वेश्चन आता है कि what will go in MAR and what will go in MDR, तो MAR के अंदर आपने ये वाला एड्रेस डाल देना है, एंड नाउ नीचे आपको दूसरा वो देंगे रजिस्टर टाइप, उसके अंदर लिखा होगा MDR, एंड आगे इस तरह का बड़ा सा रजिस्टर बना होगा, एंड दे विल बी लाइक ओके नाउ राइट द आंसर इन हेयर, जिसके अंदर आप MDR बताओ. तो MDR में आपने क्या लिखना है, MDR में जो एड्रेस के ऊपर डेटा है, दैट डेटा नीड्स टू गो, सो 11011001. सो इट विल बी 11011001. सो आप ये लिखोगे एंड यू गेट अ मार्कअप हियर. सो MDR वर्ड, MDR स्टोर्स द डेटा एट अ स्पेसिफिक रजिस्टर, डेटा एट द रजिस्टर, एट द place of register. एक second, place of register. So MDR is what is inside. Exactly, बिल्कुल. MDR is what, देखो अब जो TCS का बॉक्स आया ना, TCS का बॉक्स, वो रेयान को मे बी TCS के बॉक्स के अंदर आपका क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन रेयान के घर पहुंचा ना, रेयान के घर पहुंच गया. अब रेयान इज लाइक ओके, इस मेरे घर के ऊपर आपको ये वाली चीज चाहिए थी, उस लाइक मे बी दैट TCS वाला डब्बा इज सम एम्प्टी बॉक्स जो कि रेयान के घर गया, क्योंकि उसको डेटा चाहिए था फ्रॉम रेयान होम. सो अगर मैं रेयान के घर वाली एग्जांपल आपको समझाऊं, ये TCS वाले बंदे ने डब्बा दिया, this is empty. Now Rayan is like okay, maybe the school teacher is asking for my certificate, so जो certificate है वो certificate इसके अंदर रखेगा and this goes back. So this certificate is basically stored in your MDR. बट जब TCS वाला बंदा आपके घर शुरू में आ रहा था ना टू रेयान्स होम, तो जो उसके पास वो जो फोन के ऊपर एड्रेस गिवन था ना, एड्रेस, दैट एड्रेस was basically stored in your MAR. So address वाली कहानी, because it comes with MAR, तो जो आपका एड्रेस होता है that is known in MAR. and जब आपका डेटा आ जाता है ना, whether आप देखो, ये तो मैं आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि TCS वाली एग्जांपल, in reality it is basically computer. So when the computer CPU wants to get the data 123 from the memory, this is basically your hard disk, right? This is your hard disk. तो जो point है hard disk के अंदर भी every place has some location, maybe this is point 1, point 2 पे maybe 14 हो, point 3 के ऊपर 15 or something like that, right? So the CPU is going to store the address. तो जो आपका address of that data है वो आपका होगा, maybe this is point 1, right? So यहाँ पे 1 आ जाएगा and this is stored in your MAR. But अब इस point के ऊपर data क्या है? इस point के ऊपर the data is 123. So जो आपका data होगा which the CPU needs, that is basically 123. So आपका जो data
मर्ज होके आप वापस भी जाओगे, दैट इज स्टोर्ड इन योर MDR, बट द पॉइंट और द एड्रेस जहां पे द डेटा लाइज दैट विल बी स्टोर्ड इन योर MAR. तो आप लोग को अभी समझ आई है या नहीं, मुझे अभी जल्दी जल्दी से आप लोग क्विकली बता दो. अहमद, इज इट क्लियर नाउ कि व्हाट डू आई मीन बाय MDR एंड MAR? बेसिकली आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए, दिस CPU वाली कहानी. क्या आपका CPU है, it is going to get some data from the hard disk, but the CPU is now basically the school, it has the location addresses for every banda. TCS आपकी ये wire है, this wire जो है ना, this wire, this bus, that is basically your TCS. So it sends the data, it gives them the address wire को कि यार go to this point, और वो data, वो address कहाँ पे store होता है, in MAR, and then it goes to memory, it gets the data, and वो data कहाँ पे store होता है, वो MDR में होता है. Exactly. MAR receives the address, बिल्कुल, and MDR stores the data at that specific address. बिल्कुल perfect, आप लोग बिल्कुल पहुंच गए. So आप लोग को ये दो definition याद होनी चाहिए कि जो आपका MAR है, MAR stores the memory address of the location the CPU needs to access. Location और address, remember, इसमें keyword क्या है, memory address. This is important. And जो MDR है उसके अंदर क्या है, it stores the data. So data आपका second keyword है. So these are basically two main things. हाँ, बस इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर वो बोले कि what is MDR, तो आप लोग को ये लाइन वाली definition आनी चाहिए कि MDR is a register which stores the data at the address which is going to be processed by the computer. And अगर MAR को, तो ऊपर वाले आपने इसी तरीके से वो कर देनी है. So that is all for today. आज हमने फिर MAR MDR पर बहुत ही लंबी डिस्कशन कर दी, इवन दो दिस इज समथिंग जो कि लोग बहुत स्पीड से कराते हैं, बट आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी. सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस शेयरिंग, एंड आप लोग मुझे क्विकली सब लोग शाबाश जल्दी से बताएं. हाँ, CPU तो मस्ट है भाई, CPU जो है ना, CPU दैट इज द ब्रेन. तो आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर अभी हाथ को हेलो करना चाहते हो, एट द सेम टाइम ओके मैंने अपने कैमरा के ऊपर कोई विजुअल वो डाला हुआ था, स्टूडियो लाइट वाला, एंड इट्स लिटरली कोई रोने वाले एलिमेंट्स बना रहे हैं मुझे, लेकिन चलो. अब देखो, CPU जो है ना, CPU इज योर ब्रेन. सो इफ आई वांट टू डू हेलो, वो भी उस वक्त भी मेरा ब्रेन है, बट एट द सेम टाइम इफ आई एम लाइक ट्राइंग टू पंच यू, उसके लिए भी मेरा ब्रेन इज देयर. सो CPU इज ऑलवेज देयर. The CPU is always there. Now, man, it is some studio light feature in this Google Meet वाली चीज, and I was like maybe चलो टेस्ट कर लेते हैं, but it was literally very good that yesterday मैं टेस्ट कर रहा था. Now, I want you guys to let me know quickly this new form of this new notes taking app, is it fine or not? मुझे आप लोग ये बता दें, ये बेहतर है या जिस तरह हम पहले कर रहे थे वो मजे का था? मुझे आप लोग प्लीज ये बता दें. दिस वन, चलो, गुड टू नो, टोटली. ओहो, क्या बात है, चलो बिल्कुल सही. दिस इज ग्रेट टू नो. बेसिकली हमारा ये था कि वो दूसरे वाले में पता नहीं फॉर सम, अच्छा इट लैग्स, ओके दैट्स, किसी और का भी लैग हुआ है इसमें? मुझे कोई और भी बता दे, किसी और का भी लैग हुआ है? चलो मैं इस तरह करता हूँ, अहमद इस तरह कर लेता हूँ. मैं अभी वैसे भी मेरा प्लान है, मैंने इंटरनेट के पैकेज को वैसे भी 10 MB ऊपर कराने हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग का लैग वाला सिस्टम ना सारा इंशाल्लाह हल हो जाएगा. मैं अभी इनको वो करता हूँ. ओ यार, यहाँ पे स्टूडियो लाइटिंग बंद कर दिया. नाउ आई एम बैक. हेलो गाइस. सो यस, लेकिन आई फील लाइक दिस इज अ बिट बेटर. इसका मैंने पैकेज, हाँ बहुत रिक्वायर्स लोकेशन, नहीं, MDR डजंट रिक्वायर लोकेशन. MAR के अंदर डेटा, MAR स्टोर्स द एड्रेस, एंड MDR जो आपका होता है ना, MDR के अंदर डेटा होता है. सो आपकी जो लोकेशन वाला कहानी है वो MAR डील करती है. लाइक देखो, अब मैं TCS वाले को बोलूँ कि आपके घर पैकेज भिजवाए, तो TCS वाले को मैं ये बोलूंगा ना, उस पैकेज के अंदर मैंने क्वेश्चन भेजो कि सैफुल्लाह डिड यू वॉच द रिकॉर्डिंग, तो अब वो क्वेश्चन मैं आपके घर भिजवा रहा हूँ, सही है. अब जो MAR है, MAR के अंदर आपके घर का एड्रेस होगा, like Islamabad में you live in XYZ place, so it's going to go to your home, that is in your MAR. अब जो आपके पास जब वो पेज आएगा, आप पढ़ोगे कि okay, have you watched recording, and you'll be like yes. तो जो yes वाला आंसर है, that data जो मुझे चाहिए, the CPU which is me, the school, if I want to process your yes or no वाली चीज, अब आप yes भेजोगे मुझे, तो जो yes वाला एलिमेंट है that is going to be stored in your MDR, and वो MDR मेरे पास आ जाएगा. So I guess आज के बाद से we will be taking classes on this new form. So I guess
everyone is fine with it. Yeah, मैं internet का वो कर लेता हूँ Ahmed, and still if there is some sort of yes, answer will be stored in MDR. Ahmed, I will be upgrading my internet package. अगर उसके बाद भी लैग वाला कोई हिसाब हुआ ना, तो हम उसका कोई हल निकालते हैं. यू डोंट नीड टू वरी. आप लोग को क्लियरली समझ आनी चाहिए. कोई नहीं, आराम से. आप लोग को समझ नहीं आती फिर भी आप लोग वो करो. आई हैव मार्क्ड ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स, एंड उसमें ये कि Rihan and Ahmed, you guys did really well. Ahmed made a very silly mistake, one very silly mistake. उस हेक्साडेसिमल वाले कन्वर्जन में वो अहमद ने उधर भी नोट डाउन कर दी थी, बिकॉज ही रोट अ कमेंट कि आई गेस क्वेश्चन 12D वाज इनकरेक्ट. तो अहमद, आप मुझे करेक्ट आंसर बता देते, मैं आप लोग को मार्क दे देता, बट एट द एंड I had to deduct that mark. But still, just like that, Rihan, आपने वो लॉजिकल शिफ्ट वाले में एक कॉमन सी बहुत सिली सी मिस्टेक कर दी थी. सो अगर आपका वो भी सही होता तो वो आपको मार्क मिल जाता. उसके बगैर ये आई हैव नोटेड सम की पॉइंट्स जो कि मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करने हैं, बट इट्स ऑलरेडी 5:37. Oh ho. Manal got the highest. Manal has a perfect 25 score. So mashallah, she literally aced the whole test, by the way. And इसमें वो कोई बात नहीं है. हाँ माशाल्लाह, इसमें वो वाली बात नहीं है. In my opinion, anyone who scores 20 or above is literally doing perfect. 20 or above का मतलब है A star. You need 80% for an A star. So if you're scoring 20 or above, you're good to. सही है. एंड इसमें एक और बात है, इफ इट्स लाइक नॉट 20 or above, if you're like 16 and above, that's an A. So you all have done literally very well. बस आप लोगों ने कंटिन्यू करना है. There was this one question जो कि आप लोग में से वो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था. I was discussing it with सैफुल्ला. ओके, अल्लाह हाफिज सैफुल्ला. हमने तो ये चीजें डिस्कस कर ली थी when we were waiting for them. उसमें एक क्वेश्चन था which was basically talking about that why hexadecimal is preferred, and secondly एक था ओवरफ्लो एरर वाली बात. अब उसमें ये था कि अहमद, यू मेंशन द ओवरफ्लो वाले एक बात सही, आपने दूसरा पॉइंट लिखा ही नहीं. तो जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना, इस तरह दो पॉइंटर, ये हम इंशाल्लाह अभी डिटेल में कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. जब सब हो तो मैं ये की पॉइंट्स आप लोग को बताऊंगा कि व्हाट वर दोस कॉमन मिस्टेक्स यू गाइस मेड. लेकिन वो कुछ एक आध ऐसी चीजें थे विच आई फेल्ट कि सब ने गलत करनी. लाइक इवन मेरे टीए ने बनाई थी फॉर मी, लाइक एम्बेसडर है मेरे, लाइक स्टूडेंट विद अस एट कॉन्सेप्चुअल्स. ही मेड दिस असाइनमेंट फॉर मी, एंड व्हेन आई ओपन दैट असाइनमेंट, उस क्वेश्चन में पहले मुझे भी लगा ओके दैट्स, let's see, वो थोड़ा इस तरह था. and that was the same thing, a lot of kids got that wrong, almost everyone except for Manal का एक वही सही हुआ था जिसकी वजह से she got full marks. लेकिन perfect, everyone did literally well. So you guys are around 22-23 marks. बिल्कुल ही जबरदस्त स्कोर है, but you need to make sure कि आप लोग इसको consistent रखें इंशाल्लाह, Riyan and Ahmed, and I want both of you to get a distinction. And distinction में there are no mistakes. सही है. No mistakes, you need to get full 75 on 75. Inshallah आप लोग करोगे. Just stay motivated, stay dedicated, just like that. जैसे हमने chapter 1 की इस week पे की है, next week I'll be posting one for chapter 2, ताकि इसी तरह weekly consider these assignments or tests. It's not like those assignments जो मैं आप लोग को बोलूंगा कि भाई आप assignments खराब कर रहे, so I'm like this. I just want you guys to revise the concepts. आप लोग को weak areas का identify को, आप लोग कहाँ पे lag कर सकते हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से points को improve करना है, so that you guys can revise that whole concept. So I believe that tested all chapter 1 के concepts, so आप लोग को वो अच्छे से आ गया. So अब आगे इंशाल्लाह chapter 2 के होंगे, and इंशाल्लाह उसी के साथ जैसे हमने आज की ये क्लास काफी डिटेल में मजे की है, so just like that हम बाकी भी करते जाएंगे इंशाल्लाह. So that is all for today. अगर आप लोग के कोई questions हो तो feel free to ask. वरना Allah Hafiz and goodbye. And those clubs have been introduced. आप लोग को बाकी details उसमें होंगे, तो हम उसी में फिर game shames और वो सब कुछ खेलेंगे. Okay Ahmed, Allah Hafiz, great to know. And Riyan, Allah Hafiz, bye bye, see you, tata. The recording is on. Bye bye.